going to be giving us a very focused direction to our discussions and deliberations as we take it in our technical sessions. So I would like to invite here on the dais Ms. Enoshi Sharma, the Executive Director of FSSAI, to please accord a green and a healthy welcome to our distinguished dignitaries. स्वागत करते हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक केंद्रीय मंत्री. ये विशेष बुके, दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज ऑफ द मिलेट्स वी हैव. वेलकमिंग श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री. स्वागत हमारे डॉक्टर बेदूराम भूसल जी का, माननीय कृषि एवं आजीविका विकास मंत्री, नेपाल सरकार. स्वागत प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी का, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री. और डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवास जी का, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत. Good greetings and welcome to Dr. Ajay Kumar Sood ji, the Principal Scientific Advisor to the Government of India. To Shri Amitabh Kant, India's G20 Sherpa. Welcoming Shri Sudhansh Panji, OSG, to the Ministry of Health and Family Welfare. And to Shri G. Kamala Vardhana Rao ji, CEO of the Food Safety and Standards Authority of India. और अब आज के डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस को शुरू करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी कमला वर्धना राव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए. On behalf of Minister of Health and Family Welfare, Government of India, I welcome all the dignitaries from various parts of the world to this historic two-day conference of the food regulators being organized at Manisha Center, New Delhi. Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Government of India, who is with us today as the chief guest, and also inaugurating the conference, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Sri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, Professor SP Singh Baghel ji, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Dr. Bharati Praveen Pawar ji, Honorable Agriculture Minister of Nepal, Dr. Beduram Busal ji, Principal Scientific Advisor, Government of India, Professor Ajay Kumar Sood ji, G20 Sherpa, Sri Amitabh Kant ji, OSG to Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Sri Sudhansh Panji, respected food regulators from various countries, including countries of G20, respected ambassadors and high commissioners, representatives from Codex Alimentarius Commission, professors from international and national research institutes, food business operators, secretaries to Government of India, friends from media, ladies and gentlemen. Safe and nutritious food is key to sustainable life and promoting good health. Unsafe food containing harmful bacteria, viruses, parasites from chemical substance can cause more than 200 diseases ranging from diarrhea to cancer. As per the World Health Organization report, an estimated 600 million people fall ill after contaminated food each year, resulting in 420,000 deaths and loss of 33 million healthy life days. Unsafe food creates cycle of disease and malnutrition affecting infants, young children, elderly and the sick. Therefore, safe food supply supports national economy, trade and tourism, thus stimulating sustainable development. The global food and grocery retail market size was valued at $11,324 billion in 2021. Revenue of the food market was estimated to 9.36 trillion in 2022. The market is expected to grow annually by 6.73 CAGR. Globalization of food trade, growing world population and repeatedly changing food system have an impact on the safety of the food. History taught us that travelers from country to country carried historical tales along with local food commodities and food habits. Spices were transported in ships from India to Europe during medieval history. Food and food habits transcended territories during civilizational evolution. The famous spice route is a testimony of Indian cuisine getting internationalized. Post-globalization, we are witnessing that food from USA is eaten in Japan, Japan food is eaten in Africa, Middle East food is eaten in Russia, so on and so forth. As Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji describes as India presides over G20, one earth, one family, one future, every country is
eating food imported from the other countries. But how safe is the food and what are standards that we are setting is quintessential. For creating a global platform for the regulators, for strengthening food regulatory system and regulatory framework, Minister of Health and Family Welfare, Government of India decided to organize a two-day global conference of food regulators at New Delhi while India presides over G20. The conference is intended to enable effective understanding of compliant requirement, exchange of best practices, collaborative work areas, and to establish synergies among global regulators. We are confident that this initiative of Minister of Health and Family Welfare, Government of India, will certainly bring out solutions to many complex issues related to food and food industry and strengthen common understanding of different rules and regulations of various countries. I once again welcome all the dignitaries from India and various parts of the world and those who have joined us from online mode to this important conference. Jai Hind. Thank you, sir, for setting the tone and the context with your opening remarks. And now, ladies and gentlemen, we seek the views of highly revered and regarded Padma Shri Dr. Ajay Kumar Soodji, the Principal Scientific Advisor to the Government of India. He, ladies and gentlemen, is also the Chairperson of Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council and also the National Science Chair at the Indian Institute of Science, Bangalore. I request you, sir, for your special address. A very good morning to all the most distinguished and honorable dignitaries present on the dais and off the dais, participants from India and abroad, ladies and gentlemen. It's truly a privilege for me to be a part of this inaugural event of this two-day Global Food Regulatory Summit, and I would like to express my sincere thanks to FSI for giving me an opportunity to share a few words with you on this occasion. This gathering holds immense importance as it brings together industry leaders and experts from various domains to discuss and address critical issues related to food safety and regulations. As is said very often, you are what you eat. It means that not only our physique, rather our whole personality depends on our intake of the food. We may not live to eat, but surely we need to eat to live. We all know that. Food is an essential aspect of our everyday lives, and ensuring its safety and quality is of paramount importance. I was given the statistics by my office 2 days back that each year worldwide unsafe food causes 600 million cases of foodborne diseases and almost 4.2 lakhs deaths. 30% of the foodborne deaths occur among children under 5 years of age. WHO estimated that 33 million years of healthy lives are lost due to eating unsafe food globally each year, and this number is probably an underestimation. In this summit, in the next 3-4 minutes, I would like to point out 3 points which need attention, namely plastic in food packaging, nutraceuticals, and heavy metals in food. Additionally, I'll also point out the challenges and areas of innovation in food analysis and traceability. Plastic in food packaging have become a significant concern all over the world. The global food packaging market reached about $364 billion in 2022. It is expected that market will reach almost $512 billion by 2028, namely a CAGR of almost 6% in this period. The sheer volume of food packaging consumed annually calls for effective policy instrument to manage this menacing issue. It is crucial to address the impact of plastics on food waste, food loss, and food security. Moreover, the attention given to microplastics and their potential health impacts,
especially when they enter the food chain through packaging, requires immediate attention. The production of plastic for food packaging, largely derived from fossil fuels, contributes to greenhouse gas emissions and environmental degradation. We must explore alternatives to single-use plastics, promote circularity in food-grade plastic production, and encourage the use of sustainable material across supermarkets and takeaway services. Conducting studies on the effect of packaging on food waste is essential, and we need to analyze the regulatory landscape for disposal practices in water bodies and landfills. Moving on to nutraceutical, I have a ringside view of this as I chair the National Nutraceutical Task Force, and we know that these products are meant to provide physiological benefits and maintain good health. Regulations differ among countries, and it is crucial to establish a harmonized approach to ensure consumer safety and facilitate international trade. India's regulation on nutraceuticals cover various product forms, and it is important to develop long-term consumption guidelines and formulate regulations accordingly. The challenge in the nutraceutical sector includes the need for proper regulation to address potential health hazards associated with highly potent bioactives. Lastly, heavy metals in food pose a significant risk to consumer health. Contamination can occur at various stages of the food supply chain, from farming practices and processing to packaging. Establishing robust standard such as good manufacturing practice and good agriculture practice can help control contamination. Maximum levels of contaminants should be set to protect consumers, especially in dairy and pre-processed food items. Inconsistent regulations for animal nutrition and feed safety across regions create challenges for global trade. Contaminants in feed, including toxins, pesticides, and microbial pathogens, can adversely affect animal health and food safety. We all know that the use of antibiotics in animal feed also contributes to antibiotic resistance, a very much concern for the entire world. International collaboration and harmonization of standards and robust quality and alternatives to antibiotics and optimized feedback formulations is need of the hour. Lastly, innovation in food analysis and traceability is vital to ensure food authenticity and safety. Food adulteration and fraud can be prevented, as you know, through techniques like DNA barcoding, next generation sequencing, and proteomics. Rapid detection methods, data sharing, and collaboration can enhance traceability efforts, while blockchain-based systems provide secure and transparent record through the supply chain. Addressing the challenges and implementing best practices in all these areas require collective efforts from all of you, regulators, industry stakeholders, and consumers. I wish you all a very productive and enlightening experience in this Global Food Regulator Summit, and look forward to witnessing the outcome that will shape the future of food regulation. I would like to wish everyone a very happy International Year of Millets, and it couldn't have been better started but for this bouquets which were given to our dignitaries on this occasion. Hopefully, we all opt to eat right, eat sustainable, and eat healthy to bring a mass change. Wish you all the very best. Thank you. Thank you very much, sir, for giving us a lot of food for thought and discussions as we take our
deliberations later. Ladies and gentlemen, as India leads the G20 presidency, providing a greater voice to the global south, and then utilizing the chairship for forging win-win collaborations between the developing countries and more advanced economies with the very intent of global good and welfare for all, we now invite the views of India's G20 Sherpa, Shri Amitabh Kanji, a very well-known IAS officer in the realm of public administration and policy formulation in India and globally. I request you, sir, for your keynote address. Honorable Dr. Mansukh Mandavia, the Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Honorable Minister Shri Narendra Singh Tomar, the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, our very distinguished guests from Nepal, the Honorable Minister, Mr. Beduram Bhusal, he is the Minister for Agriculture and Livestock Development in Nepal, Professor S.P. Singh Baghel, and Dr. Bharti Praveen Pawar, the Honorable Ministers of State for Health and Family Welfare, Government of India, my distinguished colleague, Sudhanshu Pant, and Mr. Kamal Vardhan Rao. Distinguished guests, ladies and gentlemen, India is hosting the G20 presidency this year. We are hosting about 225 different meetings in all the states of India and over 65 cities of India. We are doing this at a point of time when the world is facing several challenges. 1/3 of the world is in recession, and Germany has just gone into recession. We are seeing a major crisis of food, fuel, and fertilizer. 75 countries of the world are facing a global debt crisis. There is a huge challenge of geopolitics with the Russia-Ukraine war being prolonged for over a period of a year and a half. In addition, the post-COVID era has seen over 200 million people go below poverty line. Over 100 million people have lost their jobs. But we in India see all these challenges as a huge opportunity. And as our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has said, India's G20 presidency will be decisive, it will be inclusive, it will be ambitious, and action-oriented. And ladies and gentlemen, throughout our G20 presidency, we have focused to be action-oriented and ambitious. Ladies and gentlemen, the interlinked nature of the food, fuel, and fertilizer crisis has lent itself to a cost of living crisis worldwide. This has grave consequences for the developing world, particularly the global south, pushing a large number of people into poverty, considering the present time when countries are trying to recover from the pandemic and keeping the inflation low. Ladies and gentlemen, our priority, one of our key presidency priority, has led to enhancing food security and nutrition and working towards ensuring food security for all, promoting agrodiversity and biofortification, minimizing food loss and waste, and ensuring food safety and strengthening agriculture market information system. This is a unique meeting. This is the first time that a meeting of global food regulators is being held. This has never happened before. This is the first time a meeting of this nature is being held during India's G20 presidency. And therefore we feel strongly that locally adapted crops are significant for the transition towards resilient agriculture and food systems. To strengthen research collaboration and public awareness of grain crops, the G20 in its agriculture ministerial meeting launched Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative called the Maharishi.
India has formulated the Deccan High Principles for Food Security and Nutrition, which would encourage all of you to design relevant policy interventions. Ladies and gentlemen, this is a critical time for the world. The need of the hour is not only to focus on the immediate crisis and short-term measures, but also for all countries to make their food systems more resilient in the long run. And therefore, ladies and gentlemen, I would request the global food regulators to consider, firstly, encouraging cultivation of alternative crops beyond the major grains, and it's important to focus on millets, which are very highly nutrition and require less water. And because UN has declared 2023 as International Year of Millets, we are focusing very strongly during our G20 presidency. Not a single meal is served during India's presidency without millets. And this is to promote alternative crops. Ladies and gentlemen, it's important to mobilize private funding towards research and development in climate resilient and sustainable agriculture. Ladies and gentlemen, it's important to ensure protection of the most vulnerable groups through targeted social protection programs such as food subsidies. It's important to increase our cooperation amongst government, private businesses and international partners so that nutritious production systems which ensure food security are taken care of. It's also important to implement food waste prevention programs to reduce food insecurity. There is just too much of food wastage in the world. It's important to employ digital tools to enhance agriculture practices, such as using soil maps to increase efficient use of fertilizers. And ladies and gentlemen, it's important to focus on food value chains so that all of us benefit and the poor community benefit and moves forward. With these few words, I wish this conference all the best, and I wish the food regulators make very progressive and far-reaching suggestions which can then adopt for all G20 countries. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir, for your very intellectually inspiring views and being the voice of winter and presenting the vision of our Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, farmers as important producers stand as stewards of human and planetary health, and thereby they stand central towards driving actions so as to ensure more safe, sufficient, healthy, and more sustainably produced food. So that is where we now invite the views of our Honorable Agriculture and Farmers Welfare Minister, Shri Narendra Singh Tomarji, whose leadership and efforts, ladies and gentlemen, are committed towards promoting nation's efforts for more sustainable agriculture and more bringing in farmer-centric schemes. I request the Honorable Minister, Shri Narendra Singh Tomarji, for his address. आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य कार्यक्रम के आयोजक और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया साहब, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य उपस्थित नेपाल सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री पुशाल साहब, भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल साहब, बहन भारती पवार जी, आदरणीय अमिताभ कांत जी, प्रोफेसर अजय सूद साहब, सुधांशु जी, कमल वर्धन जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी नियामक क्षेत्र में काम करने वाले महानुभाव और उपस्थित सज्जनों, आज के इस आयोजन की रूपरेखा काफ़ी पहले से प्लान की गई थी और उसी के अनुसार यह शिखर सम्मेलन आज मनसुख भाई मांडविया जी के नेतृत्व में
यहाँ संपन्न हो रहा है। इस अच्छे आयोजन के लिए मैं मांडविया जी और उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भोजन मूल अधिकार है। भोजन की उपलब्धता हो, वैश्विक खाद्य सुरक्षा हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और इस दृष्टि से भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो, इस दिशा में काफ़ी काम करने की कोशिश हुई है। और मैं समझता हूँ कि आज भारत खाद्यान्न की दृष्टि से अधिशेष राष्ट्र है और दुनिया की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्त कर सकें, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पर्याप्त रुचि रहती है। लेकिन कृषि उत्पाद एक पक्ष है, लेकिन उस उत्पाद का प्रसंस्करण हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, उपभोक्ता तक पहुंचे, यह एक दूसरा पक्ष है। और इस पक्ष में नियामकता ऐसी हो जिससे कि उपयोग करने वाले मानव को किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव का शिकार न होना पड़े। इस दृष्टि से हमारे भारत में मानक प्राधिकरण के रूप में FSI बहुत अच्छे से काम कर रही है और वैश्विक मंच पर भी FSI की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय है। आज भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और नियमन के क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक स्तर के अनेक संगठनों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब भी नियमन के बारे में विचार करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसान उसके केंद्र में हो, क्योंकि उत्पादनकर्ता किसान है और अगर उत्पादनकर्ता को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी रुचि कहीं ना कहीं अरुचि में बदलेगी। और इसलिए उपभोक्ता को भी खाद्य पदार्थ सस्ते दाम पर मिले, यह भी हमारी चिंता रहे। लेकिन जो भोज्य पदार्थ है उनका क्वालिटी भी अच्छी हो, गुणवत्ता भी अच्छी हो और किसान को अपने उत्पादन का पर्याप्त मूल्य मिले, यह हम नियम बनाते समय ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका काफ़ी लाभ कृषि के क्षेत्र को और किसान तक पहुँचेगा और उसका फ़ायदा हमें खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मिलेट्स की दृष्टि से भी सभी लोगों ने अपनी बात कही है। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर 2023 मिलेट वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
भारत में भी उसकी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं और दुनिया में भी वे गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से किसान की दृष्टि से भी बड़ा फायदेमंद उत्पाद है और किसान की इसमें लागत भी कम आती है। पशुओं के चारे की भी उपलब्धता मिलेट्स के उत्पादन में होती है। यह सस्ता अनाज है, कम जल की आवश्यकता इसमें होती है और निश्चित रूप से मनुष्य के लिए पोषकता का जो अभाव आजकल हम खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का देखते हैं, उसकी पूरकता भी मिलेट्स के उपयोग से हो जाएगी। इस दृष्टि से पूरी दुनिया में मिलेट्स की इस समय धूम है। भारत में भी हम लोगों ने G20 के जितने कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सभी कार्यक्रमों में जितने मेहमान आ रहे हैं सबको मिलेट्स की दृष्टि से एग्जीबिशन भी दिखाएं, उससे बने उत्पाद भी दिखाएं, कृषि के क्षेत्र को भी दिखाएं और उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इस दृष्टि से भी हम सब लोगों ने पर्याप्त इंतजामात किए हैं और हर मीटिंग में मिलेट्स को भोजन में परोसा भी गया है। महर्षि परियोजना निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत उस पर काम कर रहा है। G20 ने उसको रिकमेंड किया है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यह जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि बाकी सारे जितने खाद्य पदार्थ हैं उनके नियमन की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और आगे बढ़े हैं। मिलावट को रोकने की दृष्टि से भी FSI ने कई नवाचार किए हैं जो उल्लेखनीय हैं। लेकिन अब भी ये नया विषय सारी दुनिया के सामने है। FSI ने तो लगभग 15 प्रकार के अन्न के लिए 8 प्रकार की योजना बनाई है जिससे कि वो नियमन किया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर भी मिलेट्स का नियामक हो सके। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जितना अधिक इस्तेमाल हम करेंगे तो उसका लाभ हम सब लोगों को होगा। मैं समझता हूँ कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उसमें होने वाली मिलावट को रोकने की दृष्टि से और दूसरे देशों की जो प्रैक्टिस अच्छी हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए यह मंच बहुत ही उपयुक्त मंच है और FFCI इसकी अगुवाई कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी अगुवाई कर रहा है। 2 दिनी इस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ विचार विमर्श के दौरान जो निष्कर्ष आएंगे वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपका नेतृत्व, विशेषज्ञता स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और साथ साथ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, मिलेट्स श्री अन्न को बढ़ावा देने और किसान केंद्रित योजनाओं को लागू करने में देश के प्रयासों में योगदान दे रही है। आपके संदेश, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And ladies and gentlemen, we have received a message from the WHO Director General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. He could not join us in person, but he has sent across his message and good wishes. Let's view in his message. Honorable Minister for Health and Family Welfare, Shri Manshuk Mandavia, dear colleagues and friends, every day an estimated 1.6 million people around the world become sick from eating unsafe food, many of them small children. Over 200 diseases, from diarrhea to cancers, are caused by eating food contaminated with bacteria, viruses, parasites, or chemicals. For 75 years, WHO has been working to reduce the burden of foodborne diseases on global health. Just in the past week,
we celebrated 60 years of the Codex Alimentarius established by FAO and WHO as the international standard-setting body for food safety and quality. Codex standards are used worldwide to harmonize national food safety regulations and are recognized by the WTO as the international reference point for food safety. Through the FAO-WHO Codex Trust Fund, we have supported more than 50 countries to strengthen their food safety regulations. We call on all countries to modernize their regulatory frameworks and build stronger national food control systems to adjust their regulations in line with international codex standards and to strengthen monitoring to ensure standards are properly implemented and achieve their expected health impact. Thank you all for your continued commitment to a world in which everyone, everywhere, enjoys access to safe and healthy food. I thank you. Thank you to Dr. Tedros. His leadership is definitely guiding the world in achieving the Sustainable Development Goals, including the food safety and health. And now, ladies and gentlemen, on this occasion, we have three important launches. I would like to request our Honourable Minister, Dr. Mansukh Mandavia ji, to kindly release and first launch the Foodocopia. साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी से भी कि आप ये फूडोकोपिया का सबसे पहले लॉन्च। Foodocopia, one food product category, one set of requirements. Launches its portal foodocopia.fssaci.gov.in. A comprehensive and compact digital guide for Indian food product standards on a single click. Foodocopia is a single point reference of food standards for all food product categories, including standards for food quality, safety, labeling, claims, packaging, and mandatory regulatory provisions as per the food safety and standards regulations. Foodocopia is a user-friendly online platform with a dynamic repository of information pertaining to food standards for facilitating diverse stakeholders from food importers, entrepreneurs, and manufacturers to consumers. Foodocopia, crafted for ensuring safe and wholesome food for all. And may I now request the Honourable Minister to please launch the Common Digital Dashboard for all food regulators. FSSAI launches Common Digital Dashboard, repository of Indian food regulations and regulatory bodies. Our unified portal, gfrs.fssai.gov.in. For manufacturers, exporters, importers, and other stakeholders of food business. It gives easy access to consolidated standards and norms. It supports industries, ensures compliance, facilitates ease of doing business and trading. It has user-friendly search engines and filters for effortless access. It offers real-time information updates from all regulatory bodies. Common Digital Dashboard, adding pace to food business. And we now have the launch of the database of food regulatory authorities, requesting once again the Honourable Minister to please launch Sangrah. थैंक यू। और विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का भी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। अपना कीमती समय हमें देने का बहुत बहुत धन्यवाद उनके मार्गदर्शन के लिए। Ladies and gentlemen, the Honourable Minister has a pressing engagement, but we thank him, express our gratitude to him for joining us and for further guiding us.
And we now invite the guidance and the direction of our Honorable Minister of Health and Family Welfare and also of Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia ji, as I request him for his inaugural address. Ladies and gentlemen, his expertise, his dedication is committed towards improving the healthcare system in the country, bringing about a lot many transformative reforms and directed towards making quality healthcare more affordable and accessible for our people. We all agree that food, in fact, stands very integral to good health, and thereby we seek further his views and guidance as I request the Honourable Minister for his inaugural address. दो दिन के फूड रेगुलेटर समिट में अभी हमारे बीच में उपस्थित नेपाल के एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक मिनिस्टर बहादुरराम भूसाल जी, मेरे साथी मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, विशेष उपस्थित अजय कुमार सूद जी, हमारे सुधांश पंत जी, अमिताभ कांत जी, सभी विविध देश से आए हुए फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हम 2 दिन के लिए फूड सेफ्टी पर डिस्कशन और डेलिब्रेशन करेंगे। मैं मानता हूं कि फूड रेगुलेटर इस सब्जेक्ट छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देश में हेल्थ के लिए बहुत बात होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डिस्कशन होता है, प्रति वर्ष 7 दिन का सेशन लगता है और हेल्थ के बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितना महत्व वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है, उससे कम महत्व फूड सेफ्टी का नहीं हो सकता है। फूड और हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आप क्वालिटी फूड लेंगे, न्यूट्रिएंट फूड लेंगे, बैलेंस न्यूट्रिएंट लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इट इज वन टाइप ऑफ प्रिवेंटिव केयर। मैं मानता हूं कि बीमार नहीं होने के लिए फूड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हम में वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। आप समझ सकते हो इस विषय की गहराई इतनी है, फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्होंने अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या रिसर्च कर रही है, क्या सोच रही है, क्या फूड प्रोडक्ट हो रही है,
उसमें क्या कंटामिनेशन हम पा रहे हैं। कोई सॉइल में जो फूड पैदा होता है, एक फूड ग्रेन एक सॉइल में एक टाइप का न्यूट्रिएंट वाला होगा, लेकिन यही प्रोडक्ट, यही एग्रीकल्चर क्रॉप, और दूसरे सेक्टर में जाओ, दूसरे प्लेस पर जाओ, तो वहां उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बदल जाएगा। उसके आधार पर हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल वाइज, कंट्री वाइज, रीजन वाइज आपकी सॉइल की हेल्थ भी उसके पर इफेक्ट करती है। और जब हम न्यूट्रिएंट फूड की बात करें, क्वालिटी फूड की बात करें, बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात करें, तब हमें सारी इकोसिस्टम को समझनी पड़ेगी। हम एक स्टैंडर्ड आज हर रीजन वाइज, हर कंट्री वाइज उनकी सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है। एक देश में भी एक ही कंटेंट होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जहां पैदा होती है उसका जो डीएनए है उसको भी वन पार्ट ऑफ दिस स्टडी, हमें स्टडी का पार्ट बनाना चाहिए कि वो कौन सा फूड खाता, उसका डीएनए, उसका माता पिता का फूड क्या था, उसका जो वो जहां पैदा हुए हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की क्लाइमेटिक सिचुएशंस क्या है। एक डिटेल अध्ययन करके हमें कोई क्षेत्र के लिए फूड स्टैंडर्ड या फूड स्टैंडर्ड तय करना चाहिए, तब जाके हम हमारी हेल्थ को सुनिश्चित कर पाएंगे। फूड ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी और फूड हेल्थ सिक्योरिटी दोनों भी डिबेट करने जैसा विषय है। फूड सिक्योरिटी, फूड हम कहां से भी फूड ग्रेन्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक फूड ग्रेन में जो न्यूट्रिएंट है दूसरे कंट्री में आपने जब एक्सपोर्ट किया, वो देश ने फूड ग्रेन मंगाया, तब वहां फूड कोड बदल जाता है, क्योंकि वहां के नागरिक को कौन से फूड की रिक्वायरमेंट है, वो जो कुल होल ऑफ फूड दिन में लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, और वहां जो आया है फूड ग्रेन उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है। दोस्तों, उससे आपको पता चलता होगा कि विषय को कितना डीपली हमें देखना होगा। बिल्कुल हम आज चल पड़े हैं हेल्थ को ट्रीटमेंट की ओर। आप बीमार हुए, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए सारा प्रावधान होना चाहिए। हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनानी चाहिए, विश्व के हर नागरिक तक हेल्थ एक्सेस हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक बात है, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण विषय है, देश के, विश्व के हर नागरिक को न्यूट्रिएंट फूड मिले। न्यूट्रिएंट फूड के साथ साथ फूड सेफ्टी हम कैसे रेगुलेट करें। माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑल्सो, मैं फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हूं। माई सेल्फ इज केमिकल्स मिनिस्टर ऑल्सो, मैं केमिकल्स मिनिस्टर भी हूं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है, एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है। उसके लिए हम क्या करें। मैं मानता हूं कि इसलिए ही ये विषय जब देश के प्रधानमंत्री जी के सामने आया, हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाए, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखे, उसके लिए बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो। पीएम प्रणाम करके हमने एक स्कीम लॉन्च की, सारे देश के हर नागरिक तक, हर किसान तक, हर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्रयास करे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बैलेंस हो, अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उसका व्याप बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है। पीएम प्रणाम योजना के द्वारा जिस राज्य, लोकल बॉडी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट
जो प्रयास करेगी अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, कोमा इनटू इनवर्टेड कोमा, वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को कैसे कम यूज करे। जितना कम यूज करेगा उसके पीछे जो सरकार की सब्सिडी लगती है, आज लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने केमिकल्स फर्टिलाइजर के पीछे खर्च किया है। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट दुनिया के सारे देश अपनी अपनी तरह से खेडूत किसान को सपोर्ट करता है, लेकिन वो कम केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करके अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित करे। उसके लिए पीएम प्रणाम योजना के द्वारा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज करके सब्सिडी सेविंग करेगा, वो सब्सिडी अल्टरनेट फर्टिलाइजर या तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन की जाएगी। ऐसा प्रयास करके, क्योंकि ये सब सेक्टर ऐसा है, सब विषय ऐसा है, केवल कोई एक गवर्नमेंट प्रयास करेगी, कोई सिंगल कंट्री प्रयास करेगी, समाधान नहीं होगा। समाधान निकालना है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे अमिताभ कांत जी G20 की शेरपा के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने हमें स्लोगन दिया है वन हेल्थ का, वन वर्ल्ड का। एक दुनिया एक परिवार है और सारी दुनिया की चिंता के साथ हमारी चिंता होती है। केवल हम हमारी ही चिंता कर ले तो समाधान नहीं होगा। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें दुनिया की चिंता के साथ हमारी चिंता होती है। केवल हम सेफ हो जाएंगे, दुनिया सेफ नहीं हो जाएगी। जो हमें दुनिया को सेफ करना है तो हमें भी सेफ होना पड़ेगा, हमें सेफ होना है तो दुनिया को भी सेफ रखनी पड़ेगी। और इसलिए ये धारणा के साथ, ये फिलोसॉफी के साथ हम लोगों ने हमेशा काम किया है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हमने केवल अपनी ही चिंता नहीं की। जो अपनी चिंता की होती तो हम दुनिया के साथ खड़ा नहीं हो पाते। कोविड क्राइसिस में 3 समस्या विश्व के सामने आई। एक फूड ग्रेन की समस्या आई, फूड सिक्योरिटी की। हमने नीडी कंट्री को फूड एक्सपोर्ट किया। उस वक्त समस्या आई मेडिसिन की। दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और प्रधानमंत्री जी को सारी दुनिया की ओर से कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन चाहिए। और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने केवल देश की चिंता नहीं की। मुझे बराबर याद है 23 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा था और 4 अप्रैल 2020 को शाम को प्रधानमंत्री जी का मुझे कॉल आया था और मुझे पूछा था कि देश में मेडिसिन की क्या स्थिति है। तो मैंने एनालिसिस करके प्रधानमंत्री जी को बताया कि देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन है। तब प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था कि जी नहीं, देश की रिक्वायरमेंट को तो पूरी करो ही करो, देश की चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन ये समय है हमें दुनिया को मदद करनी चाहिए। और उस वक्त मोदी जी ने देश के सभी फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग करके कहा कि आप प्रोडक्शन करिए। सभी को लॉकडाउन पास दिया गया। उस वक्त देश में लॉकडाउन की वजह से प्लेन नहीं उठते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद थी, लेकिन डेली 4 से 5 फ्लाइट केवल मेडिसिन लेने के लिए आती थी। 150 कंट्री को उस वक्त हमने मेडिसिन सप्लाई किया। लेकिन ये भी हमारी फिलोसॉफी के तहत इंडिया के लिए हेल्थ है कभी कॉमर्स नहीं रहा है। इंडिया के लिए हेल्थ है हमेशा सेवा रही है। हमारा स्लोगन सेवा है। और इसलिए उस वक्त हम चाहते, या तो हमारी कंपनी चाहती तो ज्यादा पैसा लेके मेडिसिन सप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2 विशेषता रही। 150 कंट्री में इंडियन कंपनियों ने मेडिसिन सप्लाई की, प्राइस हाइक नहीं किया, प्राइस नहीं बढ़ाई, क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं किया। तब जाके दुनिया कहती है
पोस्ट कोविड में दुनिया कहती है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो विपरीत स्थिति में हमारे साथ रहती है और दोस्ती निभाती है। दोस्तों, दुनिया जब वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे तब हम वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के नीडी देशों को वैक्सीन पहुंचा रहे थे। दोस्तों, हर संभव हम हमारे गेट पर, आप कोई भी यहाँ जो विदेश से आए हुए रेगुलेटर है, कोई परिवार के में जाने का आपको अवसर मिले तो ध्यान रखना और पूछना कि आपने आपके गेट के द्वार पर क्या लिखा है, गेट पर क्या लिखा है। हमारे यहाँ गेट पर लाभ शुभ लिखा होता है। लाभ मीन्स स्वयं का कल्याण हो, स्वयं का भला हो, मेरा हो, सारी दुनिया, विश्व की सारी सभ्यता सोचेगी। एनिमल मात्र अपने लिए तो हर कोई सोचेंगे, लेकिन हम लाभ के साथ लिखते हैं शुभ, मीन्स मेरा कल्याण हो, सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए, दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। ये फिलोसॉफी पर चलते हुए विश्व कल्याण की भावना के साथ हम हमारा कल्याण देखते हैं। और इसलिए ये आपकी फूड सेफ्टी के लिए आयोजित 2 दिन की रेगुलेटर समिट, हम सेफ कैसे रहे, हमारी हेल्थ सेफ कैसे रहे, क्या करने की आवश्यकता है, वैश्विक स्तर पर उसके लिए डिस्कशन और डेलिब्रेशन कोडेक्स के रूप में वर्ष में एक बार मिल जाते हैं और स्टैंडर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जी नहीं, समय बदल गया है, हमें डिटेल डिस्कशन और डेलिब्रेशन करना होगा। जैसा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लगती है वैसे फूड सेफ्टी के लिए कोई रचना होनी चाहिए और उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ये आज की समय की मांग है। जिस तरह से हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है, जिस तरह से फूड में कंटामिनेशन पाया जा रहा है, जिस तरह से न्यूट्रिएंट अनबैलेंस न्यूट्रिएंट फूड का पार्ट बन रहा है, कई रीजन ऐसा है कि जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है और उसके पर यूनिवर्सल डिस्कशन के आधार पर हर कंट्री उसमें से अपने देश के लिए कौन सी फिलोसॉफी को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें से देश कंट्री वाइज हम हमारी फूड सेफ्टी के लिए प्रयास कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा सिलेबस तैयार कर सकते हैं, हमारा फूड स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। और इसलिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, एक कंट्री वाइज स्टैंडर्ड, 2 प्रकार के स्टैंडर्ड की आवश्यकता होगी दोस्तों। उसको देखते हुए मैं मानता हूं कि इस समिट थोड़ी टेक्निकल है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहली बार शायद मैं मानता हूं जब मुझे ब्रीफिंग दिया गया था और 1 महीने पहले जब विषय मेरे सामने रखा कि G20 की हम प्रेसिडेंसी कर रहे हैं तो क्या हम विश्व के फूड रेगुलेटर को बुलाए। मैंने कहा कि एक प्रथा शुरू करनी चाहिए और इंडिया से शुरू करनी चाहिए। धीरे 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 उसका व्याप बढ़ता जाएगा, मैच्योर होती जाएगी और एक बार एक बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के का स्वरूप उसको देना चाहिए। इस सोच के साथ आज आपकी 2 दिन की इस समिट का प्रारंभ हो रहा है। जो बाहर से आए हैं सभी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आप सब लोग मिलके फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड, फूड क्वालिटी पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसमें से जो इनपुट्स निकलेगा वो इनपुट्स अवश्य देश और दुनिया के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सबका साथ, सबका प्रयास और एक इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखते हुए वन वर्ल्ड वन हेल्थ और विश्व कल्याण के भाव से काम करने के लिए, सभी को प्रेरित करने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि रिमोट का बटन दबाकर अब वह संग्रह का भी अवलोकन करें। This, ladies and gentlemen, is the Global Food Regulatory Authorities Handbook. Ensuring food safety for nations. FSSAI launches Sangraha, Safe Food for Nations, Global Food Regulatory Authorities Handbook. Useful for exporters, importers, domestic and overseas manufacturers.
This handbook provides information on 75 international food regulatory authorities in English, Hindi, 6 regional and 12 foreign languages. Our portal has searchable filters for easy access of information. Thank you, Honorable Minister, sir. And ladies and gentlemen, as we conclude the session, I would like to now request Shri Sudhansh Panji, the Officer on Special Duty to the Ministry of Health and Family Welfare, to kindly propose a formal vote of thanks. Namaskar.